StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra. I hope you all are in finest of your health. Before anything, I would like to thank you all for such a heartwarming response for our Sociology Foundation Batch 1. By looking into the response and by looking into the demand, we are pleased to announce that we are going to commence with our Sociology Batch 2 starting from 21st of this month. Why you should join this? There are many videos which are largely present in YouTube, but rather than saying me saying why you should join, I'll just explain you what are the various requirements for you to ace sociology in civil services. If you can look into the background, there are 4 specific things which you largely need to have in order to score 300 plus in sociology for civil services UPSC Mains examination. The first step is the material. You need to have the right material. There are multiple books which are largely available. The 2 most prominent books which are very authentic and which one should refer in order to score those 300 plus is IGNO BA Sociology. But however, the problem with this material is that it's not written for civil services. UPSC के लिए नहीं बनाया गया है. तो पहले आपको इसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, इसको अरेंज करना पड़ता है और उसके अरेंजमेंट के बाद में आप एक चीज़ नोट करते हो कि रफली अराउंड 3000 से 3500 पेजेस रफली इसके अंदर टोटल होते हैं, जिसको शायद एक कम समय में पढ़ के रिवाइज करके नोट्स बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज हो जाता है until and unless you are starting your civil services journey in your first or second year. तो सोर्स बहुत अच्छा है बट शायद टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है. दूसरा एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स है हर्लम्बस एंड हॉलबॉर्न, ब्लू कलर वाली जो फेमस है, अब वो ग्रीन कलर के अंदर है, द लेटेस्ट एडिशन. वो भी किताब इट्स लाइक बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी एज सच. केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, पर्सपेक्टिव्स, थियरीज इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, सारी चीजें उसके अंदर मिलती है. बट उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, न तो वो यूपीएससी के लिए लिखी गई है और ना ही उसके अंदर शायद आपको शॉर्ट एंड सिनॉप्टिक नोट्स बनाने में शायद दिक्कत आ सकती है. तो ये दोनों जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज है, इसके कारण स्टूडेंट्स इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ये जानते हुए कि शायद इन दोनों से बेहतर कोई दूसरा सोर्स नहीं है. और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, रिट्जर, निस्बेट एंड पेपर 2 की बहुत सारी सोशियोलॉजी की किताब जैसे वीना दास, अदर्स, सोशियोलॉजी डिक्शनरी एक्सेट्रा. बट क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो वेर यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर योर जीएस, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड अदर्स, तो मटेरियल सबसे बड़ा हर्डल है. बट सोशियोलॉजी की एक अच्छी बात यह है कि मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे मेंटर्स और रेस्पेक्टेड टीचर्स के. अब तो सर आपके मटेरियल के अंदर ऐसा क्या है? मैं जस्ट आपको एक ग्लैंस देता हूं कि एट स्टडी आईक्यू आपको एक तो पीडीएफ फॉर्मेट में मटेरियल मिलेगा, एक मेरे खुद के पर्सनल हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और एक जो क्लास होगी उसके अंदर हमारे यहाँ पे उस पूरे क्लास के नोट्स, there would be people, experts who will be sitting and who will be writing the entire lecture notes and those notes would be provided to you. But ये जो notes है कुछ ऐसे वैसे notes नहीं है, just दिखाऊंगा तो शायद आपको वो notes ही इतने प्रभावित करें कि just for the material you will be just tilted toward joining our course, because what we do with passion, what we do, we want to largely commit ourselves for the welfare of students so that you don't have to be in this cycle for more than 1 year as far as possible. वो notes कैसे हैं हमारे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर जो बैच 1 के अंदर अभी जो कमेंस हुआ है उसके कुछ नोट्स. अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, ये फर्स्ट चैप्टर जिसे हम क्रक्स नोट्स बोलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, ये सारे नोट्स डेली आफ्टर द क्लास आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको शायद ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं हो. ये क्रक्स नोट्स ना ही पूरे क्लास का कंटेंट रखती है, बट वो सारा कंटेंट एक ऐसे अरेंज्ड फॉर्मेट के अंदर होता है कि जिसके बेसिस पे स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में, रिकॉल करने में काफ़ी आसानी हो सकती है. जो मैं डिक्टेशन देता हूं वो डिक्टेशन भी लिखा जाता है ताकि अगर आपने कुछ मिस किया है ड्यूरिंग द क्लास आप वो वैसे लिख सकते हो. साथ ही साथ में जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे उसको कनेक्ट किया जाएगा. एक ऐसी दिस नोट इन शॉर्ट इज लार्जली कॉम्बिनेशन ऑफ द कंटेंट
प्रेजेंटेशन एंड इन सच ए वे दैट आप इसको बैठ के बहुत इजीली फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर सकते हो. ऑल दीज नोट्स वुड बी मेड अवेलेबल नॉट ओनली ऑफ सम टॉपिक्स बट ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव इन सोशियोलॉजी वुड बी मेड अवेलेबल टू यू. ऐसे ही चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, हर क्लास के बाद में ये सारे नोट्स आपको दिए जाते हैं. इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा और दिखा देता हूं ये नोट्स में, जो भी क्लास में मैं पढ़ाता हूं वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स इधर मेंशन होते हैं. जिस तरीके से बोला जाता है एग्जैक्टली उसी तरीके से लिखाया जाता है इन अ मोर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट which is not only easy for you to revise but at the same time आपको कहीं ना कहीं आसानी भी हो जाती है इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो ये तो थी मटेरियल की बात. तो एज फार एज द फर्स्ट स्टेप इज कंसर्न्ड वी आर वेरी मच गोल ओरिएंटेड दैट जो मटेरियल आपको दिया जाए वो रेडेंडेंट नहीं हो, वो मटेरियल ऑथेंटिक हो, डेडिकेटेडली एक्सपर्ट्स, पैशनेट स्टूडेंट्स से बनाया गया हो और वो आपको मटेरियल मिल रहा है. इस नोट्स के साथ साथ मेरे खुद के पर्सनल हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड एट द सेम टाइम द पीडीएफ मटेरियल्स एंड पीपीटीज ऑफ द क्लासेस वुड आल्सो बी प्रोवाइडेड. सो एट द एंड the notes which we are going to give you would consist of Hollumbus, Ritzer, Nisbet, BA Sociology, MA Sociology, Andre Betley, MN Srinivas, modern Yogendra Singh, and so many other aspects that you don't seriously have to refer any other sources beyond this particular aspect. और अब दूसरी बात पे आते हैं. तो मटेरियल हमारे यहाँ पे क्लियरली सॉर्टेड आउट है दैट यू डोंट हैव टू रन एनीवेयर बियॉन्ड द नेचर ऑफ मटेरियल विच वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू. बिसाइड दिस अब जो बचता है, सिर्फ मटेरियल सफिशिएंट नहीं होती है. मटेरियल शायद आप खुद बैठ के 1-1.5 साल का अगर वक्त है तो बना सकते हो शायद इससे बेहतर. अब दूसरा एस्पेक्ट जो आता है मेंटरशिप, और दूसरा जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और तीसरा जो मेंटरशिप, ये दोनों चीजें बड़ी अहम हैं. क्लास के अंदर अगर इफ यू हैव टू लार्जली अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी एंड स्कोर 300 प्लस, एक ऐसा फैट या फिर ऐसी सोच बनाई गई है कि आपको सोशियोलॉजी के अंदर थिंकर्स को रट्टा मारना पड़ेगा. इसी चैनल के अंदर सोशल प्लेलिस्ट के अंदर सोशियोलॉजी बाय दिवाकर बोथरा में जाओगे तो पहले डेमो क्लास का हमने वीडियो उसके अंदर अपलोड किया है, जहां से शायद एक दूसरा स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा कि हाउ मच वी स्ट्रेस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी. क्यों? मेरा मानना यह है कि सिर्फ बोलूंगा तो शायद बोल तो सब रहे हैं, जो नोट्स है उसके मैंने प्रमाण दिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के बारे में कि टू व्हाट एक्सटेंट वी स्ट्रेस दिस इन आवर क्लास. देयर इज वन डेमो क्लास वीडियो, द क्लास 1 वीडियो विच इज लार्जली प्रेजेंट इन यूट्यूब, जहां पे 2.5 से 3 घंटे में मैंने हर सोशियोलॉजिकल थियरीज को कवर किया है इन सच ए मैनर दैट इवन अ ले मैन कैन अंडरस्टैंड दो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स. तो वो जरूर अगर आप देखोगे तो शायद ये समझ में आएगा कि वी स्ट्रेस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी. आवर गोल इज टू नॉट जस्ट कंप्लीट द सिलेबस बट complete it in both qualitative and sociological manner. The third aspect is the mentorship. होता यह है कि टीचर्स और मेंटर्स में डिफरेंस होता है. I call myself as a mentor where I'm teaching you, but at the same time my goal is to ensure that you do not fall in any trap, or your strategy towards your sociology, not only sociology but also your GS is amply clear. आपका psychological stress with respect to civil services जो भी है, my goal is to, as Mark say, just act like a sponge to absorb that and to largely keep you in a full effective and efficient mode. So that continuous mentorship would be available not only through our social media handles but personally over a period of time. We'll also look into your answer writing skills. If you're having a problem in your strategies, if you are having certain doubts, हर फ्राइडे हम पहला पार्ट जो क्लास का होता है उसके अंदर डाउट सेशंस रखते हैं, और उसके अंदर डाउट सेशंस हमेशा रखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टिल द लास्ट क्लास, ताकि आपका ये जो मेंटरशिप वाला जो वॉइड है, वैक्यूम है, उसे फुलफिल किया जा सके. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू एस सोशियोलॉजी इज आंसर राइटिंग. अब आंसर राइटिंग के अंदर जो मेरा डेमो क्लास है उसके अंदर भी आपको यू विल गेट द एविडेंस ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम हर दिन क्लास में पहले 15 मिनट हम लोग आंसर राइटिंग डिस्कस करते हैं, जहां पे प्रीवियस ईयर्स
के क्वेश्चन को उठाता हूं और स्टूडेंट्स को ये समझाता हूं कि कैसे शायद इस क्वेश्चन के अंदर आपका अप्रोच होना चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफन व्हाट यू पीपल डू इज यू पीपल ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज एंड यू स्टार्ट राइटिंग विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन को तोड़ा कैसे जाता है, हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ टू राइट ओनली दोज कंटेंट which fulfills the demand. Because it's my personal opinion that you get marks by writing what is asked, not by writing what you know. So not only every day we discuss this, but once the chapter is over, we also discuss the various previous year's question as far as possible which are available. In order to just show this, ये एक ही क्वेश्चन नहीं है. Almost every part of those previous years questions are discussed and these PPTs are provided to you ताकि एक टेम्पलेट हो सके आपके लिए कि आपको क्वेश्चन लिखना कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे फॉर्मेट्स की पीपीटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की एज फार एज पॉसिबल, ताकि और ये डिस्कस भी किया जाएगा और इसके अंदर वी लुक इनटू कि आपकी आंसर राइटिंग टॉप नॉच रहे फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. सो एज फार एज these are some of the features of our program where we are not only going to provide you the material, ensure your conceptual clarity, at the same time ensure that nothing acts as a hurdle as far as your civil services is concerned, and also answer writing. If you can largely ace all these four, whether by joining our program or whether by joining any other organizations, go ahead, but always keep in mind that you would have to largely ensure 4 at a times. Just merely conceptual clarity would not help, as that content might not be you might not able to use those content as far as your answer writing or examination is concerned. Constant mentoring जरूरी है because civil services एक लंबी जर्नी होती है. There are stress, there are days when you feel low, there are days, there are aspects, there are doubts which largely reduces your effectivity and motivations. We ensure that does not take place with our dear students. At the same time, answer writing, which is the apostle of sociology, which is in itself a challenging job, we ensure that you do not only write answers but you write it effectively. By chance, if you are interested, as I'll first repeat, the course is starting from 21st of this month. But in the first class, we will largely give you the entire conceptual clarities of the various theories. The evidences of all these things I have given you already, so that at least you know it well, that in this age of social media, when people promise a lot, they largely underperform. But we largely believe in under-promising and over-performing. The evidences of each and every aspect has not only been given to you in these last 15 minutes, but also is present in the very sociology playlist where you can go and have a look. So come, join and feel the difference, that how sociology can be understood in a very fluid, lucid and a simplified manner. If you are interested, you can use the code DIVLIVE, where if you use this code, you will get this course at 12,500. Hurry, because this is the second batch which we have just launched in the gap of 15 days because of the response which you people have thrown us and the love which you have shown. Thank you so much. See you at the classes. If you really have to make a change in your preparations as far as the entire civil services journey and specifically the sociology preparation is concerned, you're most welcome. Thank you. Have a nice day. God bless you all. Hello, I am Bhavya and I have joined the StudyIQ Live Foundation batch for UPSC CSC 2023. The faculty offered to us is very experienced in their fields. We also get effective doubt resolution despite the classes being online. We also get mentorship program and our doubts are effectively resolved day to day, and we also get help in planning our preparation accordingly. We also get PPT and effective notes for each and every topic so that we do not have to refer to any other books. Thank you, StudyIQ. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.